गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर, then there will be a displacement towards the external electric field if we consider the motion of proton. But in case of electron, the displacement will be opposite direction of electric field, and this displacement or drift will occur due to drift velocity. So students, here we can define the drift velocity is nothing but average velocity attained by the charged particle. Drift velocity is nothing but average velocity attained by charged particle. Average velocity attained by charged particle drift velocity is the average velocity attained by the charged particle such as electron or proton inside the material due to electric field. Students, drift velocity is the velocity or average velocity attained by the charge carrier, a charged particle such as electron and the proton inside the material due to electric field. Okay students? External electric fields across the terminal are applied with the help of a battery of potential V. Students, here we can see this is the conductor. Its length is L and area of cross section is A. For applying external electric field, we have to connect its terminal with a battery of potential V. Battery of potential V. V is the potential of battery. Students, this is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal of the battery. The terminal first यानी कि इसको कहा गया terminal first, इसको कहा गया terminal second of a conductor. One is the terminal of a conductor. The terminal first of a conductor is connected with the positive terminal of a battery, so terminal 1 becomes positive charge. And terminal second of a conductor connected with the negative terminal of the battery, so terminal second becomes negative charge. And due to the presence of positive and negative charge, external electric fields are produced that originate from positive charge and terminate towards the negative charge. This will be possible
only this only when battery of potential V is applied across the terminal of a conductor. Okay, students. Students, inside the conductor there are number of electrons and protons are moving due to the presence of external electric field. So students, here if we consider the motion of proton, स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, इस प्रोटॉन पे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स विल बी E इंटू कैपिटल E. Force acting on electron, force acting on a proton, force acting on a proton due to presence of external electric field, due to presence of external electric field will be F equals to E into E. Students, we know that force is equal to mass into acceleration. So here we can consider m is the mass of proton, so we denote m into m E into A is the acceleration of proton, which is equal to E into E. So here we can find A, and the value of A will be E into E divided by mass of electron, the mass of proton. Students, this is the acceleration of the proton inside the conductor when external electric field is applied across the terminal of a conductor. Students, here charge of proton and electric field and the mass of proton all are constant, so acceleration of a proton is a constant. Students, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से हम लोग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी and s equal to ut plus a half at square and v square equal to u square plus 2as. Students, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से ये प्रोटॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है विद द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन into electric field divided by mass of proton. Students, हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज कीजिए दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमने कंसिडर किया एट टाइम टी पे हमने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसिडर किया, एंड आफ्टर ए स्मॉल टाइम, so t equal to t plus dt,
we consider another cross-sectional area. In this small time, जो प्रोटॉन इस पॉइंट पे होगा वो थोड़े से समय के बाद इस एरिया को क्रॉस करता हुआ इस एरिया के अंदर आ जाएगा, यानी इस वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस लेंथ को स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि ये लेंथ x होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस स्मॉल टाइम में यहाँ से उठकर इस वॉल्यूम में आया ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के हेल्प से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया। ओके स्टूडेंट्स, and the displacement will be Vd into a small time dt. Vd into a small time dt. So students, this value and this displacement can be easily find out with the formula of displacement, because here acceleration is constant, so we can find the value of displacement travel by proton from time t equal to t equal to t plus dt. Displacement of proton from time t to t plus dt will be the distance x equal to drift velocity into change of time, means t plus dt minus t, so t get cancel out, so x equal to vd into dt. This is the displacement. Okay students, हम लोग कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसीडर किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल एन। स्टूडेंट्स, हमने कंसिडर किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द कंडक्टर क्या है, स्मॉल एन है। ओके स्टूडेंट्स, n is the number of इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर we can find number of electrons, yani here, yani this is the value of n, and the number of electrons is denoted by a small dn divided by volume a small dv. So students, here the number of electron is equal to n into dv. V is the volume, dv, and volume can be written as area
इंटू लेंथ, लेंथ वुड बी एक्स। क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ कितना है, एक्स हमने कंसिडर किया है। सो स्टूडेंट्स, and the value of dn equals to small n area into x, and the value of x जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, x की वैल्यू वी डी इंटू डी टी। सो हेयर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी n a इंटू एक्स की जगह पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वी डी इंटू डी टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स inside the small volume is Na Vd into T. Vd is the drift velocity. Okay students? Students, from here we can find the value of charge inside the small length x. Value of charge या values of electrons या protons dq inside a small length x. So students, the value of charge will be dq equals to number of electrons या number of charge into E. So students, here we can put the value of dn, and the dn will be Na Vd into dt into E. This is the value of dq. This is the value of a small charge, या कह सकते हैं value of protons inside the small length x. Students, we know that I is equal to dq divided by dt. I is the rate of flow of charge, is called electric current. So students, here we can put the value of dq, and the dq की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं n a वी डी इंटू डी टी इंटू ई डिवाइडेड बाई डी टी, एंड डी टी से डी टी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया. सो द वैल्यू ऑफ आई विल बी एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी. वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो स्टूडेंट्स, इनसाइड द कंडक्टर जो करंट फ्लो होगा उसकी जो वैल्यू आएगी एन ई ए वी डी, यानी वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एन, एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर एंड इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट्स, द फार्मूला हमें क्या आया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी. ओके स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी. ओके स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफाइन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक है. करंट डेंसिटी. स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी को हम लोग कह सकते हैं चार्ज या सॉरी
current per unit area is called current density. So students, current density को हम लिख सकते हैं current density at a point inside a conductor is defined as current per unit area surrounding that point. Current density is defined as current density at a point inside a conductor is defined as current per unit area surrounding that point. So current density at point is defined as current per unit area surrounding that point, and current density is denoted by J. So the current density is I divided by A. Students, करंट डेंसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी and vector quantity have both magnitude and direction. So students, for direction, direction is the normal vector of area. So J equals to I divided by A into normal vector यानी n cap. स्टूडेंट्स, आप कुछ ऐसे देख सकते हैं. दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and if we define the current density at point here, and this is the area, and current is flow in this direction, and this is the area of cross section, and the direction of area vector is this way yani n cap, and normal to the area vector. So students, the value of current density J equals to I A into n cap. Okay students, here we can see the current and area vector की डायरेक्शन क्या है, in the same direction में है. Here theta means angle between current and area vector is 0 degree. So current density can be defined as J equal to I upon A into n cap. Students, if we consider area vector in this way, and current is flowing in this way, and the direction of area vector will be here n cap, and the angle between I and n cap is theta. This is the conductor. Students,
the value here the direction of area vector and I and the angle between n cap यानी direction of normal vector and I equal to theta. So current density have direction always towards the current, so we have to take component of area in such a way that current flows normally through the area of cross section. So students, here we have to take a component of area in such a way that the current flowing through the area normally. So students, this area can be written as A cos theta. So students, current density can be written as J equal to I upon A cos theta into n cap. J cos theta into n cap, sorry students, I equal to I divided by A cos theta. A is also the area vector. So students, from here I can be written as J A cos theta. Students, I equal to J A cos theta, which is nothing but dot product of J into area vector, as nothing but dot product of current density and area vector. Students, if we consider a small area, if we consider a small area, and current is flowing in this way, and the angle between current density and a small area is theta, and we know that the direction of current density always along current, so the current density J equal to di, यानी स्मॉल करंट है, di divided by dA cos theta. So students, from here di can be written as J into dA cos theta, and this can be also written as dot product of J into dA, which is nothing but di, and after integration we can find the value of current, which is equal to integration J dot dA. Okay students, J dot GA. Students, here we can write some points. Note, first, J is a vector quantity, and its direction always along the direction of current. Okay students, the unit of J is equal to ampere per meter square.
third point, the dimension of J is equal to, for ampere it is written as A, and for area it is written as L to the power minus 2. So dimension of J is equal to A L to the power minus 2. ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्लास में करंट डेंसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या देखा कि करंट डेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. यानी किसी भी पॉइंट पे अगर डेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालना हो तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.